Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatide Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yatripatamaham Bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Yes. So what did we discuss last class? Anyone would like to share? Yes, Sonakshi, please tell. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Last class we did how we should how we can change duties into dedication. And we learned that we should focus on ourselves more than others. And if we don't learn to face our challenges, then we will always give excuses. Very good. This is something we learned. Yes, thank you. Yes, anyone else? Anyone else would like to say something what we learned? We discussed some slokas. Which sloka? Please tell. Yes. No one. This is what else we discussed? Yes, Prabhuji, we discussed the sloka matra spasastu konteya shitosna sukha dukkhada agama paino nityas tam stitikshashva bharata. Very good. So what did we discuss? We discussed we have Sugdu means happiness, sorrowness, but still we should go ahead with your duties. Yes. Very good, very good. We will experience success, failure, happiness, sorrow, all those things, summer, winter, but we should go ahead with our duties. Yes. Okay, very good. Yes, Niti. Prabhuji, we discussed that how to be in the circle of influence. Some things are there that we cannot change or we cannot control, so we have to move in our way and be in the circle of influence. Very good. So we have to be in circle of influence, not in circle of concern. We discussed about how we have to work on what we can change and not focus on what we cannot change. Like we cannot change summer and winter and rainy. So we should not focus or think, oh, when summer will come, I will start studying. In rainy season, I don't want to study. In the winter comes and then, oh, I like to sleep in the winter. So summer, winters and rainy, these things will keep on going on. But we should focus on what we can do. That is, we can study, we can do our duties nicely. Yes. Anyone last chance of anyone? Okay, no, nothing. Nothing. Anything else we discussed? We discussed about circle of influence, circle of concern. We discussed about how from duties we can turn into dedication through determination and discrimination. These are the two important factors which we learned in last class. Okay, so today we will be seeing how Krishna begins further the knowledge of Bhagavad Gita. So just like whenever we build a house, जब घर बनाते हैं, so the first thing we do is dig below, that is called foundation. Right? We had talked about it. So similarly, the foundation of all
knowledge of duties is our identity. So our duties are related with our identity. Like there is someone is having an identity as manager of a company, and someone is having an identity of a peon of a company. Both have different duties, correct? Can the peon behave like a manager? Can a manager behave like a peon? So based on the manager identity, the manager duties are there, and based on the peon identity, the peon duties are there. How a manager can be satisfied? If he behaves like a manager. Imagine one day morning, the manager comes to the office and says, chai, 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 and kaun piyega chai. It looks so odd. He will be miserable. He will make others miserable. Imagine the peon comes in the office and says, तुम क्यों ऑफिस नहीं आए आज, कल तुमको छुट्टी क्यों मिला? He behaves like a manager. He will be miserable. He will be thrown out of the company. So the beginning of all knowledge is to understand our identity. So Krishna begins the knowledge of Bhagavad Gita telling about our identity. Is this clear to everyone? How identities and our duties. Last class we discussed about duties. How we should do our duties at all times. Correct? So Krishna tells that if we are to do our duty, we have to understand what is our duty. First, we have to understand our identity. So because identities are related with duties. So then what is our identity? So Krishna goes further. So we have 3 levels of existence. We can see we have 3 स्तर में हम जी रहे हैं. So imagine an example. This is an example of a software, hardware, and a user. Just like I'm using a laptop now to give the class. So I'm using a laptop. So the laptop is an hardware. Everyone knows about hardware? Please raise hands, those who know about hardware. Okay, let me give you an example through the mobile. It will be more easier because you are comfortable with the mobile. Like I have this mobile. So this mobile, this is the hardware. This is the external portion of this mobile. Okay, so this is the hardware. It has a screen. It has some cameras in the back, and we can touch. And by touching, something works like this. So this is the hardware. But what runs this mobile? ये कैसे चलता है? कौन बता पाएगा ये कैसे चलता है? मान लीजिए आपको एक ऐसे खाली मोबाइल दे दिया, वो चलेगा क्या? उसके अंदर क्या डालना पड़ता है? Yes. Electricity. Okay, electricity. You require electricity. What else? What else? Software, Prabhuji. Software. Very good. There is a Mac or there is a iOS inside, or Android. How many of you know about Android and OS operating system? Very good, everyone. You all of you are Gen Next. Very good. So, इसके अंदर एक software है. That software actually runs the hardware. Correct? And then Shri Nitai Das, जिसका ये मोबाइल है, who is the user. So then there are 3 levels. You are able to understand now? The first level is the hardware. External hardware, the mobile. The second level is the software, जो हमको मोबाइल चलाने में हेल्प करता है. मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, एंड्रॉयड नहीं रहेगा, आप मोबाइल चला सकते हैं क्या? एंड्रॉयड क्या करता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर मतलब मेरे को हेल्प करता है हार्डवेयर को मोबाइल को चलाने में. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, मैं हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगा. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है हमारा हार्डवेयर के साथ. इज दिस क्लियर?
Yes, Prabhuji. Yes. So then there is software, there is hardware, and there is the operator. Operator Srinitay Das, hardware mobile, software iOS. तो एग्जैक्टली इसी तरह हमारा मनुष्य शरीर, human body also works. Human body also has a hardware, has a software, has the operator. So what is the hardware, what is the software, and what is the operator? So human body has an hardware, which is the external body which we can see. आप सबको दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सबको, हरे कृष्णा, मेरा आंख, मेरा दांत, मेरा नाक, मेरा कान, सबको दिखाई दे रहा है. वेरी गुड, रेज योर हैंड. मैं भूत नहीं हूं. Very good, very good. Good. So that is the hardware which we can see, which we can interact, that is called the human anatomy. In medical terms, it is called the human anatomy. Hamara bones, it consists of bones, the blood, the skin, the organs, the tissue, the muscles, and etc., whatever it is, right? That is the hardware. And obviously the brain and all those things, that also is the hardware. Then there is the software. Can anyone say what is the software for the human body? Prabhuji, the soul and ego, soul, all these things which are subtle in nature, which we cannot externally see. Okay, ego. Okay, so ego is half correct, but the soul is not the software. There are three software. One is called the mind, another is called the intelligence, and the third one is called the ego. And then the operator is the soul. So now, external body, all of you know, it's very easy to see and act, which is external body. Now, what is this software that we have to little bit understand? Now, what is the software that is a mind? There are three softwares. One is called the mind, another is called the intelligence, another is called the ego. Now, I will give an example to help you understand what is माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. मान लो, इमेजिन आप सबने एटीएम कार्ड यूज किया है. हाउ मेनी ऑफ यू नो एटीएम कार्ड कुछ होता है? ओके, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर रियली जेन नेक्स्ट. पापा का एटीएम कार्ड कभी चोरी किया है? हाँ, कितनों ने पापा का एटीएम कार्ड थोड़ा पॉकेट मार किया है? ओ, सब जेन नेक्स्ट हैं, पर अच्छे बच्चे हैं, मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं. तो आप सबने पापा का एटीएम कार्ड चोरी नहीं किया. मान लीजिए आपने एटीएम कार्ड थोड़ा चेक करने के लिए, क्या होता है, पापा का ले लिया. चोरी नहीं किया, ले लिया. चोरी उसको बोलेंगे नहीं, ले लिया आपने पापा का एटीएम कार्ड. तो लिया, तो जब पापा का भूल जाओ, श्रीनिताय दास का एटीएम कार्ड ले लिया, क्योंकि श्रीनिताय दास का एटीएम कार्ड है ही नहीं, तो वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो जाएगा. मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है, एटीएम कार्ड तो बहुत दूर की. तो मेरा श्रीनिताय दास का एटीएम कार्ड ले लिया कौन? अरिंजय ने ले लिया. तो अरिंजय ने से जब एटीएम कार्ड ले लिया तो एटीएम सेंटर में लिया, तो गया एटीएम में. तो जब घुसाया तो क्या पूछा? वेलकम श्रीनिताय दास. देखा, आपने कभी देखा है? As soon as you put the ATM कार्ड, तुरंत वो रिकॉग्नाइज करता है कि किसका एटीएम कार्ड है. इसका मतलब क्या है? वो कहां पे तो स्टोर किया है डेटा को कि ये इस व्यक्ति का एटीएम कार्ड है. करेक्ट. सो
The software first involves a storage device. सॉफ्टवेयर को अगर कोई भी मशीन को कार्य करने के लिए सही तरीके से एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता है जो डेटा स्टोर करता है। जैसे ही मैं एटीएम कार्ड को घुसाता हूं तो तुरंत वो बोलता है वेलकम श्रीनिताय दास। उसको पता नहीं कि अरिंजय ने पॉकेट मार किया है। सॉरी, अरिंजय पॉकेट मार नहीं करता है, बट उसको पता नहीं कि वो लेके गया है, पर वो रिकॉग्नाइज करता है। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज ए स्टोरेज डिवाइस और द हार्ड डिस्क। आपको पता है हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क, बस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस। समझ में आ रहा है ना, स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस। सो द फर्स्ट that storage device is our mind. So mind, what it does, it is like a storage device. Then what it stores? It stores all our experiences. All our experiences, good and bad. Like last summer में आप कुल्लू मनाली गए थे या शिमला गए थे और शिमला में एक कुल्फी खाए थे। जब भी याद आ जाता है प्रभु जी वो कुल्फी, शिमला का जो कुल्फी आइसक्रीम था प्रभु जी, ओह ओह इतना मिस मैं करता हूं। How many of you miss certain things which you have experienced previously? Can anyone say कि some things which you miss, which you have experienced previously? कहाँ आप गए थे, कुछ घूमने के लिए, कुछ सीनरी देखा, कुछ किया? Yes, anyone would like to share something you really miss? No one would like to share? Yes, anyone share something which you really miss? Yes, speak. Speak, someone speak. No one? Yes, Isita would like to speak. Here, Prabhuji, during my last year of college, during the last week of my semester, me and my friends, we decided to go for the heritage cruise on Hooghly River during the sunset. So that whole experience of the breeze hitting your fresh breeze hitting your face while you get to enjoy the sunset with your best friends, it was a very wonderful experience for me. Now also you're able to feel that freshness of that bridge. Yes. It was like we were going around the river in a circle. So we were going from one corner to the other. We also got to witness some puja going on in the nearby mandirs. So overall, it was a very great experience. It was also the last time I got to see my friends before we all parted all around India. So I really miss it. Oh, so the very fact that you are able to speak all these things, that means that these things are stored somewhere, correct? Yes, Prabhuji. That is our mind. So the mind stores our experiences, our emotions, our feelings, what we have felt good, what we have felt bad. Oh, Prabhuji, that sweet sop that gives such wonderful gulab jamun. I really miss it. It's really nice gulab jamun. Oh, Prabhuji, that chocolate, it is so nice, correct? So this is how our mind works. So then coming back to our previous example, when you put that ATM card, then it says, welcome Srinitay Das, put your PIN, PIN, you know the PIN, it's a code. And you put a code, 3286. And it says, sorry, wrong PIN code, correct? Now, how it is able to tell that it is a wrong PIN code?
That means it has the processing unit, सोचने की शक्ति, जिससे वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन. So every machine not just has a storage device, it has also a processor. Just like my mobile, if I have to start it, it is asking the pin. You see, now it has started asking the pin. Now I have to put the right pin. And as soon as I put the wrong pin, you see, it has written, sorry, wrong passcode. Correct? So that means it has something where it is processing, and that is our intelligence. So intelligence is actually the processor. It is that which processes all our information. Just like the mind stores information, the intelligence processes all information. Now, how it processes? I'll give an example. You went, Monday is your exam, and Friday there is a new movie that is going to get screened, and the movie is featuring Shah Rukh Khan. Hare Krishna. And you had last time seen Shah Rukh Khan's movie, and it was really good, really good. I don't know which Shah Rukh Khan was an actor in my time. I don't know who is now currently the trending hero. Yes, anyone would like to say most trending hero of current Bollywood? Prabhuji, Shah Rukh Khan is still trending now. It's still trending, okay. Yeah. Shah Rukh Khan is still trending. Okay, let Shah Rukh Khan trend all the time, no problem. May Krishna bless him. So Shah Rukh Khan's movie you saw previously, and it was so good. It was really good. It was too good. And now you see an advertisement that Shah Rukh Khan's new movie is going to get screened on Friday. So what happens? Your mind says, chalo, chalte hain. And your intelligence says, अरे तुम फेल हो जाएगा, लास्ट टाइम भी ऐसे ही मूवी देख के तुम्हारा कम मार्क आया था, इस बार तो तुम कुछ भी पढ़ा नहीं, सैटरडे संडे पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर मंडे नहीं तो फेल हो जाएगा. अरे 2 दिन है, लास्ट टाइम तो सैटरडे को ही एग्जाम था, मैं फ्राइडे को चला गया था, इसीलिए ऐसे हुआ. आज तो इस बार 2 दिन है तो पढ़ लूंगा. Mind says पढ़ लूंगा. Intelligence says नहीं नहीं तुम नहीं पढ़ पाएगा. So in this way, mind and intelligence, they work. Intelligence processes the information. Mind, it keeps all the information. आपको समझ में आ रहा है? So mind and intelligence इस तरह कार्य करते हैं. And उसके बाद ego. Ego क्या है? Ego is your identity. What you want to do. Just like आप एटीएम मशीन के पास जाएंगे कपड़ा लेके, और एटीएम मशीन क्या बोलेगा? मैं एटीएम मशीन हूं, मैं वॉशिंग मशीन नहीं हूं, कपड़ा नहीं धो सकता हूं. करेक्ट? सो सिमिलरली वी हैव एन identity. Someone is a boy, someone is a girl, someone is a mother, someone is a father. That is our ego, that is our identity. So these are the 3 things that we have in our life. That is mind, intelligence, and ego. These three things, they are called the subtle body. And these hardware is called our gross body. So the soul is actually covered by the subtle body and the gross body. The soul has 2 coverings. So we are the soul, and we have 2 coverings, the subtle body and the gross body. If we go back to the PPT again,
So we will discuss this sloka. Bhumir apo analo vayu Bhumirapo Analo vayu khammano buddhirevacha Hammano buddhirevacha Buddhirevacha ahankara iti yang me Ahankara iti Ahankara bhinna prakriti ashtadha. Bhinna Prakriti Ashtada. Sorry, the text is not proper. So it says earth, water, fire, air, ether, the mind, intelligence, and ego. These are the 8 elements that cover the soul. So the first 5 elements, earth, water, fire, air, ether, makes our physical body, which is the hardware. And then there are 3 subtle elements, that is the mind, intelligence, and ego, which makes the software. Subtle because you cannot see someone's mind. You can feel someone's mind, but you cannot see someone's mind. That's why it is called subtle. Subtle matlab you cannot see, something which you cannot see. Physical is something which you can see. So the soul is covered. So when what happens during death is, at the time of death, the soul leaves the physical body along with the subtle body. It goes to another body. Like if I write, sorry, yeah. So how do I draw? I draw like this. So this is the soul, and okay. So let me begin again. Okay. So the outermost covering of the soul is called the gross body. The innermost covering of the soul is called the subtle body. And inside is the soul. Okay. So this is the soul. The soul is covered, and the soul is actually working through this software and the hardware. तो भगवान ये बता रहे हैं. But we actually are the soul. We should not think that we are this body. That's what Krishna is meaning to say in the verse. We will see ahead in the verse that let's say Dehinosmin yatha dehe Dehinosmin yatha dehe Kaumaram yovanam jara Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantara prapti Tatha dehantara prapti Dhirastatra namuhyati Dhirastatra namohyati Dehinosmin yatha dehe Dehinosmin yatha dehe Kaumaram yovanam jara Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantara prapti Tatha dehantara prapti Dhirastatra namuhyati. Dhirastatra namohyati देखिए क्या लिखा है. देहिनो अस्मिन, इस देह के अंदर, इस देह के अंदर, ये जो देह है इसके अंदर एक आत्मा है जो कौमार, यौवन और जरा. कौमार मतलब छोटा बच्चा, यौवन मतलब युवक अवस्था, जरा मतलब वृद्ध अवस्था. तो ये अवस्था में ये आत्मा बदलता नहीं है. आप सबको पता है एक चीज कि आप देखे होंगे कि आपका शरीर बढ़ रहा है पर आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप बदल नहीं रहे हैं. मैं अभी भी श्री निताय दासी हूं, मेरा शरीर बड़ा हो रहा है
पर मैं जो फीलिंग है मेरा कि मैं हूं वो ऐसा ही है. करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि मेरा शरीर बड़ा हो रहा है. जैसे उदाहरण स्वरूप हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है. करेक्ट? मतलब मैं अलग हूं और ये हाथ अलग है. ये मेरा हाथ है. दिस इज माई हैंड. ये मेरा नाक है. मैं अलग हूं, मेरा नाक अलग है. ये मेरा नाक है. ये मेरा कान है. ये मेरा आंख है. तो ये मेरा शरीर है. तो मैं कौन हूं? तो मतलब मैं शरीर से अलग हूं. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? मैं शरीर से अलग हूं. ये मैं नहीं बोलता मैं शरीर हूं. आप सब बोलते हैं आई एम बॉडी. वी से दिस इज माई बॉडी. जस्ट लाइक आई से दिस इज माई मोबाइल. दैट मीन्स व्हाट? आई एम नॉट मोबाइल. दिस इज माई मोबाइल. This is my mouse. This is my song which I eat every day. This is my remote of AC. Okay? But I am not the remote of my AC. I am not the AC. This is my AC and my remote. So similarly, उसी तरह हम नहीं बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं हाथ हूं. मैं बोलता हूं मैं हाथ हूं. मैं क्या बोलता हूं? ये मेरा हाथ है. मतलब मेरा हाथ है. मतलब मैं कौन हूं तब फिर? So then the question is, who am I? Owner of this body. Very good. Owner of this body. So who is the owner of this body? My soul. Okay, your soul. So where is the soul then? And what is the soul? A new concept. And why I am not able to see the soul? Correct? Or can I see the soul? And why I am not able to see the soul? What makes me alive? Like sometimes some people die. वो क्या हम क्या बोलते हैं? वो चले गए. बोलते हैं ना? He left. Who left? The body is still there. Correct? शरीर तो पड़ा हुआ रहता है. कौन छोड़ के चला गया? Soul. The soul left. Now, so first Krishna explains about soul in Bhagavad Gita. Because that is our real identity. हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. और जब तक हमको हमारी रियल आइडेंटिटी पता नहीं रहेगा, तब तक हमको हमारी रियल ड्यूटीज समझ में नहीं आएगा. और उस ड्यूटीज को कैसे डेडिकेशन से करना है वो समझ में नहीं आएगा. जैसे मैंने उदाहरण बताया, अगर मेरे को पता नहीं रहेगा कि मैं मैनेजर हूं, तो मैं मैनेजर के हिसाब से कैसे काम करना है कैसे करूं? तो पहले तो मेरे को पता रहना चाहिए कि मैनेजर हूं मैं. तो इसीलिए भगवान पहला चीज जो बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. हम आत्मा जो है वो कहां है, कैसा है, भगवान विस्तार रूप से कृष्णा इज गोइंग टू टेल हाउ द सोल, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल. So Krishna says that the soul has three things by which we can understand that there is soul. सोचने की शक्ति, thinking power, महसूस करने की शक्ति, feeling power, इच्छा करने की शक्ति, willing power. These are the symptoms of the soul. जैसे symptom होता है ना, आपको कोविड आपके शरीर में घुस गया, कोविड वायरस, तो उसका सिम्टम बाहर दिखाई देगा. खांसी होगा, सोर थ्रोट होगा, बुखार होगा. करेक्ट? सिम्टम से क्या पता चलता है कि वायरस घुस गया है. तो उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा है. इससे कैसे पता चलेगा? ये तीन चीज दिखाई देगा शरीर में: सोचने की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति और भावना की शक्ति. जैसे उदाहरण स्वरूप ये जो
एप्पल का फोन है, मेरे पास 2 साल से है, पर अभी तक ये फोन 2 साल 1.5 साल होगा, अभी तक ये फोन मेरे को कभी बोला नहीं कि अरे क्या मेरा भाग्य है, ये प्रभु जी के हाथ में पड़ गया। कहाँ ये प्रभु जी कोई हीरो के हाथ में पड़ता, ऐश्वर्या के हाथ में पड़ता, शाहरुख के हाथ में पड़ता, ये नालायक श्री निताई दास के पाला में पड़ गया, मेरा भाग्य खराब हो गया। कभी ये मोबाइल ऐसे सोच पाएगा? कभी ये मोबाइल ऐसे महसूस करेगा? सिमिलर, कभी ये मोबाइल बोलेगा कि अरे मैं अकेला हूं, और एक एंड्रॉयड मोबाइल रहता तो मैं प्रेम करता उससे थोड़ा, कभी ये वो मेरा शादी करवा दो? कभी ये मोबाइल मेरे को बोलेगा अरे तुम तो शादी नहीं किया श्री निताई दास, एटलीस्ट मेरे को तो एक एंड्रॉयड मोबाइल के साथ, ठीक है एप्पल मोबाइल नहीं हो, एटलीस्ट एक एंड्रॉयड के साथ तो शादी कर लो? कभी होगा? नहीं प्रभु जी। हाँ, इतना साल से मेरे पास है, ये कभी महसूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है। आत्मा से ही महसूस करने का, भावना का और सोचने का शक्ति आता है। एक मशीन और एक मृत शरीर कभी सोच नहीं सकता है, कभी महसूस नहीं कर सकता है, कभी भावना उसका नहीं आ सकता है। कोई अगर आपको बोलता है कि अरे कैसे, व्हाट इज द प्रूफ दैट सोल इज देयर, दिस इज द प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ? दीज आर द 3 proofs. If someone is thinking, if someone is feeling, if someone is willing, सोच रहा है, महसूस कर रहा है, या फिर वो इच्छा कर रहा है, ये 3 चीज are the symptoms that the soul is there. And a dead person, जैसे ही आत्मा निकल जाता है शरीर से, वो सोचना बंद कर देता है, वो इच्छा करना बंद कर देता है। कैन एनी डेड पर्सन इच्छा कर सकता है मेरे को अभी मिल्क शेक खाना है, मेरे को अभी ये खाना है, वो इच्छा करना बंद कर, और महसूस करना बंद कर देता है। उसको थप्पड़ मारो, वो कुछ महसूस करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो बॉडी इज व्हाट, not that it feels, it's the soul which makes the body feel, it's the soul which makes the body think. We are simply using this body just like I am using this mobile. The soul is using this body to use and do these things in this world. हमको समझना चाहिए कि we are first the soul, and there are so many scientific proofs for this thing that we are going to see. So this is practical analysis. We say my hand, we say my nose, we say my body. Then who am I? That means I am something different than body. That is the soul, right? And then we say someone is passing away. So passing away, he passed away. Who has passed away? The body is still there. That means there is someone inside the body who is passing away. That is the soul. So then there are something called NDE and OBE, near death experience and out of body experience. There is a documentary which I can share in the WhatsApp group. All of you can see it at your leisure time, which says that there was one girl, a lady, not a girl, a lady. One lady was there. She was driving a car. And you know, कभी-कभी हाईवे में क्या होता है कि there are certain trucks which go, and behind the trucks there are iron rods. You have seen sometimes? ऐसे आयरन रॉड्स निकले हुए रहते हैं ट्रक्स में, आयरन रॉड्स लेके ट्रक जाता है. And this lady was driving her car, and behind this truck. So this truck gave a sudden brake, and this car dashed into the iron rods, and the iron rods actually entered into the glass panes, into the engine, and pierced her body. And somehow this lady was taken out from the car by the other people who are there on the roadside, and she was rushed to hospital.
And then there was 7-day surgery for the lady, the American lady. And then the lady recovers from the lady's brain waves had completely gone flat, and somehow they had given some life support systems, the doctors, and by which the lady was alive. And when the lady came back to consciousness after 7 days, the lady started telling the doctors how they were operating her. The doctors were shocked. The doctor could not believe that the lady said, I was seeing you, all of you operating me, and I could see from the top, and all of you operating. The doctor said, ye lady bak kar rahi. And then the lady said, this nurse is supposed to getting engaged, इसका शादी होने वाला है, और ये बार बार शादी की बात कर रहा था हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में, और आप उसको डांटे कि इतना सीरियस ऑपरेशन में तुमको शादी का पड़ा है. And the doctor is shocked to hear कि ऑपरेशन थिएटर में मैं ये नर्स को डांटा क्योंकि वो शादी का बात कर रहा है इतना सीरियस ऑपरेशन में. ये लेडी को कैसे पता चला? इसका ब्रेन वेव्स तो फ्लैट है. So this is called near-death experience, where the soul is just out of the body, but that has not left the body, and it has still some hope that शायद अगर शरीर ठीक हो जाएगा मैं फिर से घुस जाऊंगा. And that is called the near-death experience. This also shows that we are not this body, we are soul. So this is one of the experience. And then everyone is able to understand this? Yes, Prabhuji. Others are able to understand? Yeah, very good. Very good, very good. Prabhuji, I was not able to understand the near-death experience. Yeah. So what happens is that the person is able to see herself getting operated when uska brain waves and everything is flat. You are able to understand? Yes, Prabhuji. मतलब आप अपने आप को बाहर से देख पा रहे हैं. ये कैसे होगा? जब आप आपके शरीर से अलग है तब जाके हो पाएगा ना. समझ में आ रहा है? मैं बाहर निकल के मेरे शरीर को कैसे कब देख पाऊंगा? जब मैं अपने शरीर से अलग हूं. Yes, Prabhuji. So that is called the near-death experience. Okay, the next one is easy to understand. That is called the past life memories. So this personality is called T2 Singh. तो ये टीटू सिंह एक दिन आगरा के एक जगह पे पैदा हुआ. और टीटू सिंह जो है छोटा बच्चा, इसको डिस्कवरी चैनल ने कवर किया था. ये छोटा बच्चा बोलने लग गया अपने पिताजी को, गांव के रहने वाले थे, पिताजी को कि मैं टीटू नहीं हूं, आप मेरे को टीटू क्यों बुला रहे हैं, मैं तो सुरेश हूं. पिताजी बोले सुरेश? कौन सुरेश है? ना मैं आगरा में रहता हूं, मेरा आगरा में बड़ा दुकान है, रेडियो शॉप है, टेलीविजन बिक्री करता था मैं, मेरे को मेरे दुकान पे लेके जाओ, मेरी पत्नी से मिलवाओ, मेरा पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा रेडियो का दुकान है, मेरे को मर्डर किया गया था. पिताजी सुन के बोले क्या ये बक बक कर रहा है बच्चा. ये छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का. इसका जो YouTube लिंक है आपको मैं भेज दूंगा, इसको आप देखिए. तो जब बहुत परेशान किया टीटू कि बोलने लग गया मैं सुरेश हूं, तो ये लड़का को लेके चला गया पिताजी ने, चलो आगरा चलो. छोटा सा बच्चा कभी भी आगरा नहीं गया था, आगरा में अपने दुकान पे लेके गया और सही में पिताजी ने देखा दुकान के सामने लिखा है सुरेश रेडियो शॉप. पिताजी तो ओके, तो पिताजी तो परेशान हो गए कि अरे कैसे ले. और वो एक उस दुकान के अंदर गए तो एक महिला थी, वो विधवा महिला थी, विडोड थी. और ये टीटू सिंह बोलने लगा ये मेरी पत्नी है.
और ये महिला बोली बच्चा बोला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, क्या है? तो फिर बोले मैं सुरेश हूं, तुम पहचान नहीं पा रही है? तो फिर टीटू बोलने लग गया। फिर ये महिला ने अपने बेटे का छोटा वाला पिक्चर भेजा और बोला कि इस पिक्चर में बताओ कौन हमारा बेटा है, कौन हमारा बेटा नहीं है। वो सब बता दिया। वो अपने घर लेके गया, अपना जितना बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स बता दिया, घर में क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है मरने के बाद वो बता दिया, कैसे मरा वो भी बता दिया। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये था कि टीटू सिंह, देख रहे हैं, एक टीटू सिंह के पास एक मार्क है, सर्कुलर मार्क दिख रहा है पिक्चर में, देख रहे हैं इधर मार्क। यस प्रभु जी। कैसे ड्रॉ करो? ओके, तो ये देख रहे हैं, मैं रेड में दिखा रहा हूं। हाँ जी प्रभु जी। सो टीटू सिंह का ये जो मार्क है, टीटू सिंह के इधर जो मार्क है, बर्थ मार्क है, जब उसकी सुरेश वर्मा जो बोल रहा था मैं सुरेश हूं पिछला जीवन का, सुरेश को यहीं पे गोली लगा था। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलता है इसी जगह पे उसको गोली लगा था। तो अगर हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, तो कैसे हम अपने कुछ लोग अपने पूर्व जन्म को याद कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम शरीर हैं तो हमारी पूर्व जन्म को हम याद नहीं कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज से कुछ लोगों को अपने, जैसे ये जापानीज ब्रदर्स के बारे में इधर मेंशन्ड है, इधर देख रहे हैं, इधर एक वो देख रहे हैं जापानीज ब्रदर का, you're able to see? So Yes, Prabhuji. these two Japanese brothers were born as Burma twins, and they remembered that how they are Japanese brothers, how they were Japanese twin brothers in their previous life. So why I'm not able to do? So they were Japanese twin brothers. So these all scientific examples. There is one professor called Professor Ian Stevenson of West Virginia University, who has done extensive research on past life memories and reincarnation, how the soul comes from one body to another body. This is what Krishna first explains. पर इसको हम अपने जीवन में कैसे लगाएं और ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हेल्प करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे. So today we just gave you information, and how we can apply this in next in our life we will see next class. So क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिला आज? पहला इंफॉर्मेशन मिला कि हमारा एक्चुअली हम आत्मा है और हमारी दो शरीर है. एक है हमारी हार्डवेयर जो बाहर है, और एक है हमारा सॉफ्टवेयर जो मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस ईगो है, जो अंदर है. माइंड कैसे काम करता है? इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. इंटेलिजेंस, इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, एंड ईगो इज द आइडेंटिटी, एंड द सोल इज द ऑपरेटर. सोल का क्या सिम्टम है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. एंड सोल जब निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है. और सोल का साइंटिफिक प्रूफ क्या है? पास्ट लाइफ मेमोरीज एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. इसमें कुछ आपका कुछ डाउट है तो पूछिए. नेक्स्ट क्लास ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होता है, हाउ वी कैन अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ सोल फॉर इन आवर लाइफ, एंड व्हाई कृष्णा इज टेलिंग दिस नॉलेज टू अर्जुना, वी विल सी नेक्स्ट क्लास. यस, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. Anyone has any doubt? आपको समझ में आया? थोड़ा आज टेक्निकल था. Yes. What is the difference between subtle body and consciousness? Okay, सूक्ष्म subtle body and आत्मा में क्या अंतर है? Subtle body is the software, आत्मा is the operator. मेरा और एंड्रॉइड में
जो अंतर है वो आत्मा और सटल बॉडी में वो अंतर है. Subtle body helps me to operate the and work with the hardware like that. Yes, or koi? Yes, Sonakshi, please tell. Prabhuji, I had one doubt. I didn't understand the part when you said soul, feeling, thinking, and willing. Yeah, very good. So, soul creates this thinking, feeling, and willing. Soul is the source of thinking, feeling, willing. If the soul is not there, the body will not think, body will not will, body will not feel. The dead body and living body में difference ये है कि living body thinks, living body feels, living body wills. सोचना, महसूस करना और भावना, ये सारे तीनों चीज केवल जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब होता है. समझ में आ रहा है सोनाक्षी? Yes, Prabhuji. तो ये तीन चीज आत्मा से आता है. जस्ट लाइक अगर श्री निताई दास को बुखार हो जाएगा, कोविड वायरस घुस जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? कुछ तो बाहरी सिम्टम रहेगा ना. क्या क्या सिम्टम रहेगा सोनाक्षी? Like cough, cold, fever. वेरी गुड. सो दीज आर द सिम्टम्स जिससे पता चल, बाहरी सिम्टम्स जिससे पता चलता है कि अंदर वायरस है. करेक्ट? Yes, Prabhuji. तो उसी तरह व्हाट आर द बाहरी सिम्टम्स जिससे पता चलेगा कि अंदर सोल है? Like the cold, cough are outside symptoms. कि अंदर वायरस घुस गया. हाँ. तो सिमिलरली मैं पूछ रहा हूं आपको कि अंदर अगर सोल है किसी के शरीर के अंदर, तो बाहर से कैसे पता चलेगा? क्योंकि सोल को तो हम देख नहीं पा रहे. जैसे वायरस को आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे ना. पर बाहर के जो एक्सटर्नल सिम्टम्स है, जैसे बुखार हुआ, जैसे खांसी हुआ, उससे पता चल रहा है कि अंदर कोई वायरस घुस गया. करेक्ट? Yes, Prabhuji. उसी तरह आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं, पर बाहरी जो एक्सटर्नल जो सिम्टम्स है उससे पता चलता है कि आत्मा अंदर है. तो वो एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है? वो है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. Okay, Prabhuji. अब समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? कि जो हमको कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर सोल है, is by the actions of willing, feeling and thinking. And an example which I gave, what was the example? Like virus. So वायरस को देख पाते हैं? सोनाक्षी वायरस को देख पाता है? नहीं, पर सोनाक्षी वायरस का एक्शन देख पाता है. करेक्ट? Yes. तो उसी तरह हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं, पर आत्मा की एक्शंस को हम देख पाते हैं. ओके? पर ये आत्मा का जो ज्ञान है, इसको कैसे हम जीवन में लगाएं, हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट वीक. ओके? एंड आई विल सेंड यू 2 यूट्यूब लिंक्स, उसको आप देख लीजिए. ठीक है? Anyone has any more question? Yes, Sanvi has raised. Please ask. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, why can't we all remember our past lives and only a few people? Very good. Now, this is a very good question. That why can't we remember? Why? So, yes, Prabhuji. So scientists have found out that when we are in our mother's womb, when we are inside our mother's body, that time the mother produces certain hormones called oxytocin hormones. So this hormone creates amnesia, matlab forgetfulness in the baby's memory loss. So the most of the memory is lost, or some of the memory is there still in the beginning parts of the childhood, but then going ahead we lose that memory because we start putting more and more new fresh things. Correct? जैसे fresh data आप डालेंगे तो पुराना data क्या होता है? डिलीट होते जाता है. पहले तो मदर के पेट में जब हम रहते थे तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है, वो भुला देता है ना. क्यों हम भूल जाते हैं? क्योंकि पिछले जीवन में कभी कभी वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस.
उसको भुला के भगवान हमको नया जीवन, फ्रेश जीवन आसानी से जीने के लिए मौका देते हैं, इसीलिए भुला देते हैं, right? So, but the scientific way that scientists have found out is this hormone which creates forgetfulness. Sometimes you are able to understand. Sandy? Yes, Prabhuji. Some, my goodness, a lot of death. And why do we say during that I am dying? Yes, I am dying because my body is I'm coming out of the body, right? Actually, I am dying, but if I am dying, I am the body, then the body is actually not dying. It is the soul which is coming out of the body. But we say, I am leaving my body. I am dying because the death means the soul leaves. The definition of the death is the soul leaves the body. So because the definition of death is soul leaves the body, so I am dying. So that means that I am leaving the body. Yes. हम अपने शरीर छोड़ रहे हैं. That is how the death is defined as. Okay, anyone else has any question? No? Okay, ठीक है. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Bhagavan ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna.